हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर अदर टर्म्स। सो लेट्स बिगिन दिस पार्ट। First is organic compounds. The compounds of carbon are known as organic compound. We know that what is organic chemistry? The study of the carbon compound only is called organic chemistry. So the compounds of carbon are known as organic compounds. Organic compounds contains hydrogen and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives. What is the mean of hydrocarbon and their derivatives is studied one by one. First is methane, ethane, propane, ethine, ethyl alcohol. These are the organic compounds. The organic compounds have the weak covalent bond due to which their melting and boiling points are low. जो हमारे organic compounds होते हैं उनकी melting और boiling point क्या होते हैं, low होते हैं due to covalent bonding, because covalent bond are weaker bond. Most of the carbon compounds, organic compounds, are non-conductor of electricity due to unpresence of free electrons and not dissociate into आयंस, उन्हें आयंस में डिसोसिएट नहीं किया जा सकता. कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव द melting point, boiling point. This is a chart which can show the states at room temperature. Next is history of organic compound, and it is also known as vital force theory. Earlier it was accepted that the organic compound are only present or found in living things, for example animals and plants. शुरुआत में ये माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग एनिमल्स में और प्लांट्स में एक्सर्ट किया जा सकता है, लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं. बट वाइटल फोर्स इज नेसेसरी टू मेक द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग बॉडी. कौन सी फोर्स नेसेसरी होती है? वाइटल फोर्सेज आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग बॉडी. बाद में ये थ्योरी डिसअप्रूव कर दी फ्रेडरिच होलर ने. लाइक यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. This vital force theory was disapproved by scientists named Friedrich Hohler in 1828. He made first organic compound urea in lab. First organic compound urea in lab, NH2CONH2. He could make urea diamide carbonyl from inorganic compound ammonium cyanate. First is ammonium chloride react with silver cyanate to form ammonium cyanate, and this ammonium cyanate then again heat to form urea. This reaction are not important for examination view. Next is hydrocarbon. The compounds of only hydrogen and carbon are known as hydrocarbon. वो कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के ही एटम्स होंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. फॉर एग्जांपल अल्कीन, अल्केन, अल्काइन. कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, double bond between carbon carbon, triple bond between carbon carbon. Hydrocarbons are the two types: cyclic hydrocarbons and aliphatic hydrocarbons. Cyclic means ring shaped, aliphatic means straight chains or branched chains, but cyclic means ring formation compounds. हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड इन नेचर. जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं नेचर में. Derivatives of hydrocarbons. The elements other than carbon and hydrogen are attached with hydrocarbon chain are known as derivative of hydrocarbon. The element other than carbon and hydrogen are attached with the hydrocarbon chain are known as derivative of hydrocarbon. वो देखिए, जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी कोई और कंपाउंड उसमें अटैच होंगे तो वो क्या होंगे? डेरिवेटिव कहलाएंगे. इन अल्कोहल ऑक्सीजन इज अटैच्ड अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीजन इज कार्बन attached. क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो आर अदर देन हेलोजन ग्रुप में. नाइट्रो, थायो, साइनो अदर देन कार्बन, हाइड्रोजन. Inorganic compounds of carbon. Some carbon compounds does not show the property of organic compound are known as inorganic compound of carbon, like carbon dioxide, carbon monoxide, carbonate ion, carbon disulfide and cyanide group. Next is classification of carbon compound. Basic classification is aliphatic and cyclic. On your syllabus only aliphatic compounds, saturated and unsaturated only. Saturated and unsaturated, alkane, alkene and alkyne. Ring are homocyclic, heterocyclic. Homo means all atoms of the cycles are same, like carbon, 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 carbon in hexane, cyclohexane. Hetero means different compounds are present, like thiol, etc.
aromatic and non-aromatic. Further, homocyclic divide into aromatic, non-aromatic, and again is anti-aromatic. First is aliphatic or chain hydrocarbons. The hydrocarbons which form the chain compounds are known as aliphatic chain or non-cyclic hydrocarbons. For example, ethane, butane, isobutane. Saturated hydrocarbons. The hydrocarbons containing single bonds between carbon and carbon atoms are known as saturated hydrocarbons. The hydrocarbons containing single bonds between carbon and carbon atoms are known as saturated hydrocarbons. For example, alkane. General formula of alkane is CnH2n plus 2. Here the number of the hydrogen are the 2 more than the twice of the number of carbon atoms. इसको देखिए लर्न करने का क्या आसान तरीका है. Number of the hydrogen atom are 2 more than twice of number of carbon atoms. First 8 homologous of the alkane are. First is methane, that means 1 carbon hydrogen. Methane, then ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane. देखिए जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जा रहा है. If 1 carbon and 4 hydrogen is, if 1 carbon is increased to the next homologous, 2 hydrogen is increased. That means every homologous have the difference of CH2 group. Every homologous have the difference of CH2 group. Next is unsaturated hydrocarbons. The hydrocarbons containing double and triple bond between the carbon and carbon atoms are known as unsaturated hydrocarbons. Alkene and alkyne, double bonded and triple bonded groups. General formula of alkene, CnH2n. Here the number of the hydrogen atom are the twice the number of carbon atoms. First 7 homologous of alkene. First is ethene, then propene, butene, pentene, hexene, heptene, octene. यहाँ पे देखिए एटलीस्ट दो कार्बन के बीच में तो एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट होना ही चाहिए. General formula of alkyne, CnH2n minus 2. Here the number of the hydrogen atom are the 2 less than the twice of the number of the carbon atoms. First 7 homologous of the alkynes are C2H2 is the first, CH triple bond, CH ethyne, propyne, butane, pentine, hexyne, octane. Okay. Next is homologous series. It is a group of the carbon containing compounds which can be represented by a general formula, have the similar chemical properties, show the gradual change in their physical properties as the number of the carbon atoms increase in the chain. Homologous series क्या है? The group of carbon atoms का group containing compounds, ठीक है, कार्बन कंपाउंड कंटेन करने वाले एटम्स का ग्रुप विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला, जिनको किसी जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट किया हो, जैसे एल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमने देखे. हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, शो द ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी एज द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इंक्रीज इन द चेन, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे चेन में. एवरी सक्सीडिंग होमोलोगसिस डिफर बाय द फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग होमोलोगसिस CH2 ग्रुप. हर एक सक्सीडिंग जो होमोलोगस है वो कितने डिफरेंस से हैं अपने प्रोसीडिंग से CH2 ग्रुप से. CH2 का डिफरेंस आता जाएगा. बिकॉज व्हेन वी प्रोसीड द नेक्स्ट होमोलोगस, इफ 1 कार्बन इज इंक्रीज देन 2 हाइड्रोजन इज इंक्रीजेस. In the terms of atomic mass or atomic weight, every succeeding homologous is 14 gram heavier than the preceding one. और इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं, आप कह सकते हो प्रोसीडिंग से सक्सीडिंग तक जाएंगे तो 14 ग्राम हैवियर और उससे कम हैवियर हो जाएगा. इथेन इज 14 ग्राम हैवियर देन मीथेन. मीथेन हैज 1:2 ग्रुप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा, 14 ग्राम हैवियर. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन इज अ वर्सेटाइल मीन्स यूनिक in nature, which forms the long chain compounds of carbon, cyclic carbon compounds and double triple bond carbon compounds due to their tetravalency and catenation property. So here we are describe this versatile nature on the basis of their tetravalency and catenation property. Tetravalency, the tendency of the carbon atoms to form the 4 covalent bond to complete their octet or attain nearest noble gas configuration is called tetravalency. Catenation, the property of a carbon atom to form long chain compound by self combination is known as catenation. Due to this reason, the number of the carbon compound exist in nature. I hope you understand all the terms of this part. Please like, share and subscribe our channel for upcoming notification. Thank you and have a nice day.